Hello everyone. Good morning all of you. I hope you are fine and happy new year to all of you. Then today we are starting with our next class of the oscillation. Then we will discuss some question related to our class 10, unit 10th and physics oscillation. Okay. Our first question is there. This one, a mass of 8 kg is executing SHM of amplitude is 30 centimeter, restoring force is 60 Newton, the displacement is 30 centimeter, then find their time period, acceleration, potential energy, and when displacement is 12 centimeter. Okay, we discussed already these topics in our last class, then how we can find their time period, acceleration, and potential energy. Before this one question, beta, I am telling you about these terms again, basic of these terms. Then here how we can find the displacement in oscillation, that is y equal to a sine omega t. This one is a simple equation of the oscillation motion. When any body is oscillating, moving to and fro motion along the mean position, then we will call it oscillation. And during the oscillation, then how we can represent this one in form of the equation displacement y equal to a sine omega t. Okay, this one equation we can say equation of the simple harmonic motion. With respect to this one, then our velocity will be there. When we will take differentiate of displacement, then we will get their velocity. इसको differentiate कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, velocity मिलती है, that is equal to dy by dt. So here we can write there d by dt, then a we can write there a sine omega t, then here after this one, then here we can write there a omega cos omega t. Okay, this one our velocity we will get there after differentiation of the this one displacement. Next our acceleration will be there. Acceleration, how we can write there, that again differentiation of the velocity, then we will get there acceleration. After the differentiation, then here we will get there omega square y. This one will become our acceleration. Okay, so kinetic and potential energy also we have to find out. So how we can find their kinetic energy relation, beta, half mv square. Kinetic energy क्या होता है, half mv square. So here we will put value of v in form of here, not angle, in form of the displacement and amplitude. Then here kinetic energy will become 1 by 2 m omega square a square minus y square. This one will become our kinetic energy, and potential energy will be there 1 by 2 m omega square here y square. This is our potential energy. Total energy, when we will total, then here we will get there 1 by 2 m omega square and a square. और इस factor को क्या बोलते हैं बेटा, this one m omega square, this one factor we will call it m omega square, that is our k spring factor, this one m omega square. So keep in mind this formula also, there also we will use sometimes this one formula. So here first we have to find out time period using these terms. How we can find their time period? In our question given mass of this one 8 kg. Okay, first we are writing which terms are given. Mass of this one here given 8 kg is executing SHM, simple harmonic motion चल रहा है, then whose amplitude is here 30 centimeter. First check these terms are given in SI unit or not. If not given in SI unit, then convert into SI unit. Okay, this one given in your centimeter, so kg is unit, your SI only, amplitude is not given in SI, then we will convert there in meter. So after converting in meter, then it will be your 0.30 meter. Then the restoring force is here 60 Newton. Okay, F force is given here 60 Newton. Keep in mind बेटा, कोई भी बॉडी अगर oscillate करती है, simple harmonic motion के along move करती है, then there always will be act there restoring force. जो force लगता है, जो try करता है, body will come back on the mean position. Okay, restoring force की direction क्या रहती है, हमेशा mean position equilibrium position की तरफ रहती है. It will be try always that body will come back on the mean position. Okay, so this one force is equal to your 60 Newton. Then displacement is 30 centimeter. Displacement क्या given आपको 30 centimeter given है. Then this 30 centimeter again we will convert into meter. Then here we can write there 0.30 meter. Then find their time period. So first how we can find their time period? अब हमें पता time period क्या होता है, t equal to your 2 pi by omega. Okay,
ओमेगा इज नॉट गिवन बट वी कैन फाइंड दिस वन ओमेगा बाय दिस वन फैक्टर। इसको यूज करते हुए हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। सो हियर वी कैन राइट देयर एज वी नो फर्स्ट वी विल फाइंड बेटा ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई this one, here use this one m omega square equal to your k. Clear? Force is given there. First from here we will find their k. Okay, restoring force आपको given है तो हमारे पास ओमेगा we can write there k by m अंडर रूट। मास भी गिवन आपको क्वेश्चन में, के गिवन नहीं है। फर्स्ट वी विल फाइंड देयर ओमेगा फॉर फाइंड आउट के। तो हमने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू के वाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड के इज आवर कांस्टेंट। सो के वी कैन राइट देयर मैग्नीट्यूड ओनली वी विल कीप देयर के बाई वाई, सॉरी एफ बाई वाई, F by y. This one restoring force F will be directly proportional to the change in the elongation and compression that will be given your y, and remove this proportional sign, then here we will take a one constant that is your spring constant, then your k. So k we can write there F by y. तो k को हम निकालेंगे, k क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्स गिवन है 60 and this one displacement given 0.30, सेंटीमीटर गिवन था 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो रिमूव दिस वन पॉइंट, देन हियर वी कैन राइट देयर 100, देन 1 to 1 0, देन हियर विल बिकम, देन k क्या आ गया हमारे पास? k विल बी इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 200। k क्या आ गया? 200। तो यहाँ से क्या है? ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू 200 पुट की। मास क्या गिवन हमारे क्वेश्चन में? 8. Now solve this one. Okay, after the solution of this one, then here we can write there 8 to the 16, then here left 4, 8 5 the 40, then 25 coming, then omega equal to your under root 25, then here after this one solve this one under root, then here will come your 5 radian per second. क्लियर? तो हमारे पास ओमेगा क्या आ गया बेटा? इसको सोल्व करने के बाद ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द ओमेगा। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना था? सबसे पहले में टाइम पीरियड फाइंड करना था, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। हमने ओमेगा फाइंड कर लिया। सो यूजिंग दिस वन, देन हियर टाइम पीरियड वी कैन राइट देयर टी इक्वल टू यर 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, सो दिस वन 2 पाई बाई your omega equal to your 5, then 2 by 5 pi. Okay, then solve this one, 2 into 3.14 divided by your 5, then solve करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। फर्स्ट वी हैव टू लर्न ऑल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे, देन सी योर क्वेश्चन, देन विच टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस वन टर्म। नेक्स्ट वन योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी। सो एक्सेलरेशन हाउ वी कैन फाइंड देयर इन दिस केस ऑफ एक्सेलरेशन, देन acceleration we can write there omega square y. Here will be minus in your acceleration. So omega हमने find कर चुके हैं। कितना आया था ओमेगा हमारा? 5 रेडियन पर सेकेंड, then 5 into 5 25, and displacement is given in our question. Displacement is this one 30 centimeter, then converted into meter, then it will be a 0.30. Okay, then solve this one. Here remove this one point, then here will be 100, then your 25 into your 30 and divide by your 100, then here solve this one, minus 7.5 meter per second square. This one our acceleration here. उसके बाद चेक करो क्या फाइंड करना हमने? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स योर 12 सेंटीमीटर, जब क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 12 सेंटीमीटर हो जाती है। सो डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी दिस वन, पोटेंशियल इज दिस वन। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट क्या 13 है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई
12 सेंटीमीटर, कि डिस्प्लेस कर रही बॉडी 12 सेंटीमीटर एंड एम्पलीट्यूड गिवन है आपका 0.30 मीटर. So in this one case we will use there and my m omega square direct you can use their value of k क्या यूज की थी हमने 200. तो इन दोनों को सेपरेट ना करके हमने कंबाइन हम यूज कर लेंगे k. So using this one then here we can write their kinetic energy. Our formula 1/2 m omega square a square minus y square. तो इस फैक्टर को हम क्या कर देंगे, we can write their k a square minus y square. ओके के क्या आ जाएगा, हमने 200 अभी फाइंड किया था 200 एंड योर ए इज एम्पलीट्यूड गिवन इन आवर क्वेश्चन 0.30 स्क्वायर माइनस 0.12 स्क्वायर, दिस वन आवर डिस्प्लेसमेंट. ओके solve this one, then here will be 100, then here coming 100 here, then solve this one square of this one, then here as we are removing this one 0 square minus here 12 by 100 square. Okay, then here will become here 3 3 ja 9 and here divide 10 raised to power minus 4 will become minus 12 141 square into your 10 raised to power minus 4. ओके इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ से क्या 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 900 माइनस 141. ओके सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या बचा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 into your this one. So here subtract 900 from this one, then here left your 9 then 5 8, then here left this one. So here will become 759 into 10 raised to power minus 2. So kinetic energy, in short we can write their kinetic energy equal to your 7.59 joule. क्योंकि हमने क्या किया बेटा, ये 10 टू पावर माइनस 2 है, इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे जाने के बाद 100 बन जाएगा, 100 से 2 जीरो पॉइंट के बाद हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 7.59 काइनेटिक एनर्जी. ओके ऐसे ही हमने क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर. सेम सेपरेट ना करके हम क्या कर लेंगे, इसको एक ही फैक्टर में लिख देंगे. सो दिस वन यू कैन राइट देयर 1/2 k y स्क्वायर. ओके k की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या फाइंड किया था 200. इट विल बी योर 200 ओनली, देन इनटू योर y स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इज देयर. ओके हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर, डिस्प्लेसमेंट क्या यूज करेंगे 12 सेंटीमीटर. ओके गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर कि 12 सेंटीमीटर पे आपको डिस्प्ले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी. सो 0.2 मीटर वी आर कन्वर्टिंग इनटू मीटर. सो हियर वी कैन राइट देयर 100, देन इट विल बी योर 141.4, then here divide by your 100 into 100. पॉइंट को रिमूव करेंगे बेटा, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 स्क्वायर ऑफ दिस वन, देन 2 times 100, then square of the 12, then 144, then into your this 100 also, then 100 to 100 cancel out, then here left 1.44 joule. So this one our came your potential energy. I hope you understood beta how we can find there these acceleration, time period, kinetic and potential energy using these factors. Okay, try to do yourself also. So now our question, a point particle of mass is this 1.1 kg is executing SHM with amplitude is 0.1 meter. Then when the particle is passing through the mean position, then its kinetic energy becomes this one. Okay, then we have to find out equation of motion. आपको इन फैक्टर्स को यूज करते हैं क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ मोशन of its particle if initial phase of oscillation is 45 degree. अब phase भी given आपको क्वेश्चन के अंदर. So how we can find this one, let us see this one. Here mass is given, write the given factors. Mass given 0.1 kg is executing SHM whose amplitude is given here 0.1 मीटर. एम्पलीट्यूड क्या गिवन 0.1 मीटर गिवन है. सो पार्टिकल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन से पास हो रहा है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन गिवन
काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻³ जूल, और आपको फेज क्या गिवन, इनिशियल फेज इज गिवन 45 डिग्री। तो इन टर्म्स को यूज करते हुए हमें क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ मोशन, this one we have to find out. So how we can write this equation? First we are writing beta this equation of motion, y equal to, क्या equation होती है, ऐसे y equal to amplitude sin omega t plus phi. This one is a general equation of the simple harmonic motion. So we have to complete this equation by using these given terms. Here first check which terms are given. Mass given है, amplitude given, amplitude is given already 0.1 meter, kinetic energy and phase is given 45. So in our question that omega is not given. First we have to find out omega. If we can find omega, then put here, then our equation will be completed. So given these terms, using these terms, how we can find their omega? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट वी आर राइटिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, अभी फॉर्मूला यूज किया था ना, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। This is the kinetic energy acting in your simple harmonic motion. So here mass is given, omega आपको find करना है। Kinetic energy already क्या given है, 8 into 10⁻³ and a is amplitude also given 0.1. डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है आपको, पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन पे क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपनी 0 रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, ऑन राइट हियर ऑन मीन पोजीशन y will be equal to 0. Okay, so kinetic energy we can write there, kinetic energy we can write there 1/2 m omega square a square. सभी फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दो। आफ्टर पुटिंग दीज टर्म्स, देन ओमेगा हाउ वी कैन फाइंड देयर काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2 m omega square a square. काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट देयर 8 into 10⁻⁴, क्या गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर, a into 10⁻⁻³ this kinetic energy we will put here. Mass is given in our question 0.1 kg, mass is given 1/2 0.1 kg. Okay, omega we have to find out. Then amplitude in our question given, a is amplitude which is given in our question 0.1, mass already 0.1 kg given, both are 0.1 kg, then this also here 0.1 kg square. After putting all value, then here we will solve this one, 8 into 10⁻³ equal to here 0.1, then removing this point, then here we can write there divide by 10. Okay, so here also here 0.1 and here also 0.1. Removing these both points, then here we will write there 10 into 10 and here will be omega square. So we will take these terms this side. So here will be your 8 into 10⁻³ equal to 1/2 into 10⁻⁻³. These 3 10 na? Then we will take upper side, then we can write there 10⁻⁻3. Then omega square will be there. So 10⁻⁻3 to 3 cancel out. This one 2 take this side, then it will be 16 omega square. I hope you understood. So omega will be equal to your 4 radian per second. तो यहाँ से omega क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा. So how we can write this equation of SHM? This one our complete equation. So we will put value of amplitude omega 5. Then our equation will be there. तो हमें equation ही निकालनी थी. equation के लिए हम क्या use कर रहे हैं? So equation of your SHM. This one equation, SHM equation. Now we can write there y equal to amplitude is given your 0.1 sin ओमेगा अभी आपने फाइंड किया, क्या आया है 4, this one 4, this one here 4 ना,
See here 4 radian per second. This only value we will use here. So here omega 4 time is t plus 5. 5 is your phase difference. Here phase is given already, initial phase 45 degree. So here we will put there 45 degree. So like this one we will write their equation of the SHM. First we will write their general equation of the simple harmonic motion. Then using the given factors, then we will complete this equation by finding amplitude, omega and their phi. Okay, omega we will find there by using their requirement, because we know that omega we can find there by using time period also, 2 pi by t, and in form of frequency omega we can write there 2 pi nu. If mass given, then we can write there m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहाँ से ओमेगा का रिलेशन क्या बनता है बेटा, अंडर रूट के बाई एम। तो ये डिफरेंट रिलेशन है आपके ओमेगा के। दिस रिलेशन वी कैन यूज बाय यूजिंग आवर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट फॉर फाइंड आउट ओमेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर, which of the following example represent the periodic motion? Here their different examples are given. Here we have to check which motion are periodic or not. So first one, swimmer completing the one complete round from one bank of the river to the another bank. ये कह रहा है कि जो स्विमर कंप्लीट कर रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, that it is a periodic motion or not? No बेटा, periodic motion क्या होता है कि when any body is oscillating along a fixed path, repeating its path. ओके अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट करती है, उस पाथ को, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। एंड ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन की मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग अपने आपको रिपीट करना। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज द ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक, एक फिक्स पोजीशन के अलोंग पाथ रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सो हियर स्विमर, दिस वन इज नॉट अ पीरियोडिक, नॉट periodic motion. So next, freely suspended bar magnet displaced from its your north south direction and release. So this one here periodic motion will be there. Next will be your hydrogen molecule rotating about its center of mass. जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो रिपीट कर रहा है अपने आप के पाथ को। सो दिस वन ऑल्सो आवर पीरियोडिक मोशन, this also periodic motion. Next will be an arrow released from the bow. Okay, हम arrow release करते हैं bow से, so this one is not periodic motion because it is not repeating. ये नहीं कि हम उसको release कर रहे हैं फिर से वो वापस आ रहा है, release कर रहे हैं फिर से वापस, repeating नहीं हो रही, so there is no repetition of the arrows releasing from this one, so this is not periodic motion, not periodic motion. Not periodic motion. I hope you understood beta how we can write their periodic or non periodic. Now see next question, which of the following example represent the simple harmonic motion and represent periodic non simple harmonic motion. अब हमने differentiate करना है कि simple harmonic motion या periodic motion है, और given examples. So here different examples are given. First one given, rotation of the earth around the axis. Okay, see here by picture this one example, if any object is a revolving around the fixed position, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है सेम इंटरवल पे, तो उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। एंड देयर इज अ ऑसिलेटिंग अलोंग द मीन पोजीशन, कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है टू एंड फ्रो मोशन के अलोंग, उसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और जो रिपीटेशन होगी अलोंग फिक्स इंटरवल तो वो क्या होगी, आपका पीरियोडिक मोशन होगा। तो इन्हीं एग्जाम्पल को आपको इसके साथ रिलेट करना है और चेक करना है कि कौन सा आपका एसएचएम को फॉलो कर रहा है, कौन सा आपका पीरियोडिक मोशन को फॉलो कर रहा है। सो हेयर रोटेशन ऑफ द अर्थ इज देयर, सो हेयर रोटेशन इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ around this one fixed around the sun, so this one repeating again its path again and again, so this one motion will be our periodic motion. कैसा मोशन रहेगा हमारा, पीरियोडिक मोशन रहेगा। नेक्स्ट आवर मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग मरकरी एंड कोलम इन अ यू ट्यूब। तो ये क्या कह रहा है, ऑसिलेशन, ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में मरकरी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। सो दिस वन ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, सो दिस वन विल बी आवर एसएचएम, नॉट योर पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
So motion of a ball bearing inside a smooth curved ball, then when are releasing from a point slightly above the lowermost point. So during this one also, then which type of the motion will be there? Motion here, this one will follow your simple harmonic motion. Now, generally vibrating of the polyatomic molecule about equilibrium position. Equilibrium position के along vibration करना, this also your to and fro type of the motion. So this one also will be simple harmonic motion. These are the different example of the simple harmonic and periodic motion. How we can understand difference between them. So here graphical question is there. So in your xt plots for the linear motion of the particle, which of the plot represent the periodic motion and what is the period of the time? In there ये different graph given है बेटा. इन graph में आपको represent करना है कि which graph is representing their periodic motion or not. कौन से वाला ग्राफ क्या है पीरियोडिक मोशन को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो पीरियोडिक मोशन अभी बताया जिसके अंदर क्या होगा, ओसिलेशन होगा बट अलोंग अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को फिर से रिपीट कर रहा है कि 2 सेकंड के लिए आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, फिर से नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, हर एक 2 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या आपका आपका क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा. सो आपको इसी टाइप के मोशन को ग्राफ में चेक करना और चेक करना है कि कौन सा ग्राफ पीरियोडिक है या नहीं है. So first one graph is given, x and t graph is given. So this one's line is there. So this line is not having any repetition of the time. इसके अंदर ये ग्राफ कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रही. That is a uniform motion only. Uniformly motion, uniformly क्या कर रहा है, increasing starting, then it will be increasing only. Increasing order में ही जा रहा है, repeat नहीं कर रहा. So this one is not our periodic motion. Now see our next example. यहाँ से बॉडी क्या करे, स्टार्ट करी, फिर यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है. ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, फिक्स इंटरवल पे ही रिपीट कर रहा है. सो दिस वन टाइप ऑफ द मोशन विल बी पीरियोडिक मोशन. दिस वन विल बी पीरियोडिक मोशन बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ मोशन. अपने मोशन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट विल बी पीरियोडिक मोशन. सो नेक्स्ट सी बेटा दिस टाइप ऑफ मोशन हियर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग. दिस वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म. कोई रेगुलरिटी नहीं है रिपीट करने का, ऊपर नीचे तो हो रहा है बट दिस इज अ नॉट रिपीटिंग टाइम. रेगुलर इज नॉट देयर कि फिक्स इंटरवल के टाइम पे क्या कर रहा है, रिपीट करे. सो दिस वन इज नॉट पीरियोडिक. ये कोई पीरियोडिक नहीं है बिकॉज ऑफ नॉट फिक्स टाइम of repetition. इसका कोई repetition का कोई fixed time नहीं. That's why it will be non-periodic motion. This one is a repeating its interval of time, fixed interval of time of there during the oscillation. That's why this type of the motion will be our periodic motion. ये क्या है, periodic motion हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, फिक्स इंटरवल पे रिपीट कर रही है अपने मोशन को. So next question, see. A spring having with the spring constant is 1200 Newton per meter. Say spring constant आपको given है per meter is mounted on a horizontal table as shown in figure. ये figure given है बेटा, यहाँ पे spring given है, यहाँ body given है. तो ये क्या कर रहा है, इस कांस्टेंट के साथ यह है, इसके साथ अटैच कर रखा है. दिस वन ब्लॉक हैविंग मास इज 3 kg अटैच टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग के एक एंड पे क्या है, एक ब्लॉक अटैच कर रखा है जिसका मास क्या गिवन है, 3 kg. एंड द मास इज देन पुल्ड साइड वे टू द डिस्टेंस ऑफ द 2 सेंटीमीटर. इसको पुल कर रहे हैं विद द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. हाउ मच एक्सटेंशन विल बी देयर, 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज, फिर छोड़ दिया गया. डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. इसके बाद कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन and their maximum speed. So how we can find these factors? First we will write beta all factors which are given in our question, then we will find their frequency. So here given our k, first we will write their given terms. Our k is given 1200 Newton per meter. This one k on the horizontal table. Then mass of this one block is mass given here 3 kg. And during writing these, check these are given in SI unit or not. Then after that here displacement is 2 centimeter is given, 2 centimeter given. Then here we can write their y 2 centimeter. If maximum displacement is there, then we can say it is amplitude only. So determine the frequency of the oscillation. आपको क्या find करनी है, frequency find करनी है
और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम फाइंड करनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड, वी ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम। तो ये फाइंड करने हैं। फर्स्ट वी आर राइटिंग देयर दिस फॉर्मूला ऑफ दिस वन, then after writing formula then we can check which terms they are given and which terms we have to need there. So for the frequency we can write there 2 pi nu equal to omega, then omega by 2 pi equal to your frequency. So omega also not given, but omega we can find using these two factors. इन factors को use करते हम omega निकाल लेंगे. So maximum acceleration हमें find करनी. maximum acceleration क्या होती है हमारे पास, maximum acceleration will be minus omega square, y is there, तो maximum पे y किस में convert हो जाता है, a में, maximum amplitude. ओके ये क्या हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं बेटा, बिकम्स एम्पलीट्यूड. सो दिस वन विल बी कन्वर्टिंग इनटू एम्पलीट्यूड, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी कन्वर्ट हियर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. उसके बाद क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ए, कैपिटल ए वी आर राइटिंग फॉर एम्पलीट्यूड. सो फर्स्ट वी विल फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, ओमेगा की. इन दो फैक्टर्स को यूज करके हम ओमेगा निकाल लेंगे. सो ओमेगा वी नो अबाउट 100 and divide by mass, mass is given here 3, then solve this one 400 under root 400 k. Okay, then here omega will be equal to 20 radian per second. ये आ जाएगा. So omega came, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी. फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट देयर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 pi frequency omega, then frequency equal to omega by 2 pi. So omega our came 22 into 22 by 7, 1070 by 22. This one our frequency. ये फ्रीक्वेंसी आ गई. उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड देयर एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमारे पास. मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज दिस वन. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, then here we can write there minus omega a. Okay, minus omega e, maximum acceleration minus omega square a. amplitude omega हमारे पास क्या आया था, 20 आया था. 20 square into amplitude. amplitude क्या है, amplitude is there, maximum we can write there. सो ऑन दिस वन डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. दैट्स व्हाई हियर वी विल यूज दिस वन 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज गिवन. सो हियर 0.02 मीटर, दिस वन विल बी आवर एम्पलीट्यूड. सो हियर वी कैन राइट देयर 0.2 amplitude. So here it will be 400 into remove this point, then divide by 100. 20 to 20 cancel out, then it will give us 8. This one meter per second square. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. उसके बाद क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी मैक्सिमम फाइंड करनी है. सो मैक्सिमम वेलोसिटी हाउ वी कैन फाइंड देयर, ओमेगा ए. This one omega is 20 into your amplitude is your divide by 100. 0 to 0 cancel out, then 4 by 0. 2 to 4, then by 0, then it will be your 0.4 meter per second. This one will become our velocity. Like this one we can find their acceleration and velocity using this one term. So next last one question, a piston in the cylinder head of a locomotive has a strike twice the amplitude. This one here 1 meter. Okay, stroke क्या given आपको, 1 meter means amplitude we can write there. Amplitude we can write there half of this one, that is 0.5 meter.
If the piston move with a simple harmonic motion with the angular frequency given at 200 radian per minute given, not per second. So find their maximum speed. तो क्या निकालनी है आपको? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है. मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी? v maximum we can write their ओमेगा एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या हो गया? हाफ ऑफ दिस वन, क्योंकि क्या गिवन आपको? ट्वाइस द एम्पलीट्यूड. सो हियर ओमेगा 200 and here this one here 0.5. So solve this one 0 to 0, then 10 to 10 cancel out, then it will be give us 100 meter per minute, not here per second, because here minute is given there. Like this one we can find their maximum velocity. I hope you understood, beta. Thank you for watching today our video.